and welcome to the latest episode of Crick Sunday with me, Suramya Kaushik. बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते. This past week, the Indian team was in action in South Africa. हाँ, वो अलग बात है कि वो एक्शन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला. From a 4-session test match to the T20 World Cup schedule announcement, बहुत कुछ हुआ इस week. So let's see what all happened this week and how did you guys react to it. Cricket as a sport has a rich history. It's more than 150 years old and बात करें 150 साल पुरानी तो बहुत लंबा अरसा हो चुका है जब से क्रिकेट हम लोगों की दुनिया में है. But after all these years, this week in 2024, something exceptional happened. We got to see the shortest ever test match. The match got over in just 642 balls. That is just a few more overs than the total number of overs bowled in an ODI match. Now, at the start of day one of the match against South Africa, the Proteas came out to bat. And by the time day one ended, South Africa were batting. But they were batting again in the second innings and lost 3 wickets. Isn't that something very exceptional and something bizarre? ये क्या बात करता है यार? Well, दोबारा बोलते हैं. साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही थी टॉस जीतने के बाद और दिन के खत्म होने पर भी साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, लेकिन दूसरी बार well, this is something incredible and exceptional. It was like someone had pressed a fast forward button on the match. Anyway, India came out victorious in the glorified ODI played in whites. Let's see how you guys reacted to it. इन 2 दिन में ख़त्म हो गया. थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के बदलाव टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं. इंडिया टेस्ट मैच तो एक्चुअली पूरा 5 दिन का होना चाहिए, जब भी उसका मज़ा बना रहता है. जैसा कि सभी चाहते हैं, जिस तरीके से पहले के मैचेस चलते थे कि 5-5 दिन चल रहे हैं पूरा. कितने ज़्यादा प्लेयर हमारे जैसे राहुल द्रविड़ कितने अच्छे प्लेयर थे, वो टेस्ट में कितना टिक के खेलते थे. और आज के प्लेयर देखो जैसे आते हैं कि एकदम से T20 की तरह खेलने लगते हैं कि भाई अभी जैसे 20 ओवर में मैच को ख़त्म करना है. तो यार बिल्कुल मज़ा ख़त्म कर दिया टेस्ट मैच का जिस तरीके से चल रहा है आजकल ये सब. तो मुझे तो बहुत ही बेकार लगा कि टेस्ट का मज़ा ही ख़त्म कर दिया पूरा. The pitch just comes into play. It's kind of unpredictable where we play, and I mean obviously I would prefer to see a drawn-out 5-day match. I think that's what everybody expects out of the entertainment. But it is what it is. The conditions weren't necessarily favorable, so it's fine. It happened. हमारे लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, ये तो क्रिकेटर्स के लिए अच्छा होना चाहिए. और दूसरी बात है पिच इस तरह से थी कि वो 2 दिन में मैच ख़त्म हो गया. और देखिए जिस तरह से पिच बिहेव करती मैच वैसे ही जाएगा और ये बनता था. और मेरे हिसाब से पिच बैटर्स के लिए बहुत डेंजरस थी. In the cricketing world, एक चीज तो पक्की है कि अब कोई भी क्रिकेट मैच ले लीजिए, कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट ले लीजिए, जब तक इंडिया पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ना, तब तक कुछ मसाला सा नहीं मिलता है. बात तो सही है. Actually, India-Pakistan match is that one match that actually gives that oomph factor to your favorite platter. Now, every time an ICC event schedule is announced, all eyes search on that one particular match, India versus Pakistan. In the upcoming T20 World Cup, India will take on their arch rivals on 9th June in New York. Yes, a very different venue, different conditions, but at the same time, old rivalry. T20 is a format where we get to see close encounters between two sides, especially India and Pakistan. Well, it's great news for all the Indian fans living in the USA. Let's see how all the fans reacted to India versus Pakistan match happening on American soil. इंडिया पाकिस्तान एक बहुत ही हमेशा एंथुसियाज्म का मैच होता है. वो इंडिया में तो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, ये सदियों से चला आ रहा है. तो अभी ये देखना है कि यूएसए में वो सेम एंथुसियाज्म फर्वर मेंटेन होता है कि नहीं, बिकॉज हमें पता है कि अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा क्रिकेट लीग सेटअप होने जा रहा है. तो वहाँ के लोग कितना इस पे रिएक्ट करते हैं. बट ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज एन एक्साइटिंग मैच टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड बीइंग एन इंडियन टीम सपोर्टर वी नो वील विन फॉर श्योर. पहली बात तो मेरे को ये भी नहीं पता कि वहाँ पे स्टेडियम कितने तैयार हैं, कितनी पिचेस तैयार हैं और कैसे बिहेव करेंगी पिचेस, ये भी देखना पड़ेगा. क्योंकि किसी भी टीम को अब ये एडवांटेज होगी या डिसएडवांटेज होगी ये तो कह नहीं सकते. The kind of performance we saw in World Cup
from India was a dream team performance. So I think if the same team goes to New York for this match, we have to see wonders, and it'll be amazing, and I'm just super excited for this match. All these big name occasions such as World Cups should happen in areas where the sport is developed, and I understand that the motive is to make sure that the sport grows in other countries as well. But yeah, I mean, it takes away from the environment of it. It takes away the certain feel that you get when you have a World Cup in a country like India itself. देखिए ठीक है, ये आईसीसी ने किस तरह से सोचा है इस पर देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी कंट्री को कहीं ना कहीं आपने होस्ट बना दिया है जो पूरी तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे हिसाब से कोई छोटा टूर्नामेंट अभी उनको होस्ट करने के लिए देना चाहिए था। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे सामने आपको देखने को मिलेगा कि अभी वहाँ पे स्टेडियम्स भी सही से तैयार नहीं हैं, और जिस तरह से पिचेस किस तरह से बिहेव करेंगे किसी भी चीज़ का बहुत खास पता नहीं है। और जब वेस्ट इंडीज़ उनके साथ में होस्ट कर रहा है, अगर वो को पार्टनर है, तो वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है अपने स्टेडियम्स को रिनोवेट करने में। तो मेरे हिसाब से अभी अमेरिका इस तरह या यूएसए का है तो वो तैयार नहीं है होस्ट करने के लिए। यूएसए में होने जा रहा है। पहला तो यूएसए का कल्चर क्रिकेट का नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे भी जाके इंडिया झंडे गाड़ने वाली है, ये तो पक्का है। और आपका क्वेश्चन इंडिया पाकिस्तान का मैच, और चकदे पट्टे जीतेंगे इंशाल्लाह यार। 2023 was all about the ODI format, but 2024, this new year, this is all about T20. Now India has just one T20 series left before the T20 World Cup in June. That is the 3-match T20 series against Afghanistan starting in January. These matches are very, very crucial for the teams and for the selectors to see what could be their potential squad for the World Cup. Now, even though there is an IPL before the World Cup, still these 3 international matches hold a lot of importance for the Indian camp. It would be quite interesting to see how the selectors and the team management will approach this series. Now, the biggest question is, are Rohit Sharma and Virat Kohli really interested in playing the T20s and going to USA for all the T20 World Cup matches? Well, that's something for all of us to figure out. Meanwhile, let's see what are the fans expecting from this 3-match series. It's interesting, you know, how 2024 has started with test format, and now how everybody is talking about the T20 format. So on one side there are tests, on the other side there are T20s. But in between all of this, there's a lot of cricket. Well, whenever we come on this show, we talk about cricket and we interact with you people. So आप लोगों के साथ हमें मिलकर बहुत मज़ा आता है, और जैसा हम हर बार कहते हैं, जब तक ये मीम्स और रील्स का सिलसिला चलता रहेगा सोशल मीडिया पर, हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे क्रिकेट संडे में, एवरी संडे ओनली ऑन क्रिकेट नेट।